Hello students, welcome to the biology world. Today we discuss about the first chapter, that is the living world. We already discussed about this chapter, so this is the revision lectures. Students, हमारी जो 24 मई को एग्जाम्स है, बायोलॉजी का जो पेपर है, उसमें हमारे जो दोनों चैप्टर है, ये पूरे का पूरा वीक यानी कि मंडे ट्यूसडे और थर्सडे फ्राइडे जो हमारा वीडियो आएगा वो टोटली रिवीजन बेस पर होगा. सो ये चारों के चारों वीडियो है वो आपको रिवीजन के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं. जो भी स्टूडेंट्स पीछे हो या फिर जो स्टूडेंट्स ऐसे हो जिसमें कोई ना कोई टॉपिक है उसमें थोड़ी कोई जगह डाउट है या फिर कॉम्प्लिकेशन है, तो ये वीडियो उनके लिए है. वो फिर से ये वीडियो देखे, नोट्स हमने ऑलरेडी आपको भेजे हुए वो पढ़े. हमने एक क्वेश्चन बैंक आपको भेजी हुई है, वो क्वेश्चन बैंक के बेस पर ही ये रिवीजन वीडियो टोटली जाएगा. तो ये क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं ये हम आपको फिर से रिवाइज कराएंगे, यानी कि पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज होगा. और फिर ये जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन हम आपको एक पीडीएफ और वर्ड फाइल में नोट्स की ओर से भेज रहे हैं. सो ये रिवीजन वीडियो देखें, फिर वो नोट्स पढ़ें और अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करें. सो फाइनली जब आप 24 को पेपर लिखने बैठोगे तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये पेपर लिख पाओगे. ये जो हमारा बेसिक चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही इजी चैप्टर है. ये फंडामेंटल और बेसिक चैप्टर है जो 11th स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में दिया गया है. सो बिना घबराए ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज करिए और जहाँ भी थोड़ी घनी डिफिकल्टी हो तुरंत हमारा कांटेक्ट कीजिए या फिर हमारे जो वीडियोस है उसको फिर से देखें. आपको डेफिनेटली जो क्वेश्चन है वो आंसर लिख पाएंगे. सो नाउ स्टार्ट द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. स्टार्टिंग ही हमने किया है कि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है. द लिविंग वर्ल्ड नाम में ही पूरा का पूरा चैप्टर है. लिविंग यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. लाइव का मतलब ये होता है कि जो इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में हम बेसिक बात करने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विद द बेसिक क्वेश्चंस, दैट इज व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करते हैं. सो फर्स्ट वी लिस्ट आउट दोज कैरेक्टरिस्टिक्स which totally differentiate the living organisms to the non-living organisms. So we start our first question, that is list out the characteristic of living organism. So now we discuss about the first questions, that is list out the characteristic of living organism. So now we list out the first question answer. Characteristics of living organisms. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो है ग्रोथ. सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन. थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म. Fourth one is self-replicate. Fifth one is consciousness, यानी कि ability to sense. So ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से टोटली डिफरेंशिएट करती है. अब हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम डीप में स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ग्रोथ. व्हाट इज ग्रोथ? डिफाइन द वर्ड ग्रोथ. सो इंक्रीज इन मास, increase in size and increase in numbers. It is known as growth. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने साइज में, अपने मास में, सेल नंबर में जो इंक्रीजिंग करते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ. सो
increase in mass, size and numbers, it is known as growth। दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑल वर्ल्ड। फर्स्ट इज प्लांट्स एंड सेकंड वन इज एनिमल्स। प्लांट्स आर ग्रोन कंटिन्यूअसली। वी नो दैट प्लांट्स ग्रोथ आर कंटिन्यूअसली। जब तक प्लांट है वो लाइव है तब तक वो ग्रो करेगा। मगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स है वो एक सर्टेन एज तक आकर उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। सो एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो सर्टेन एज तक ही होगी। सो नाउ वी डिक्लेयर दैट plants has continuously growth and animals growth are till up to certain age। मगर बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनिजम्स है, ऐसी भी ऑब्जेक्ट्स है जिसको देखकर हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखें या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि माउंटेन्स आप देखें तो माउंटेन्स पहले से इतना बड़ा नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी जो साइज है वो इंक्रीज करता है। सो साइज को इंक्रीज करने के लिए तो हम उसको ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक बेस में रखते हैं। सो नाउ वी डिस्कस दैट माउंटेन्स हैज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो माउंटेन्स की जो ग्रोथ है, जो उसकी साइज इंक्रीजिंग साइज होती है, वो कैसे होती है? सो सम मटीरियल्स accumulation of some materials on its outer surface। माउंटेन्स की जो इंक्रीज साइज वो सिर्फ आउटर साइड से ही हम देख सकते हैं, इनर साइड से वो कभी ग्रो नहीं होता। जबकि हम प्लांट और एनिमल्स की बात करें सो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में क्या होगा कि दोनों के अंदर सेल्स की जो अंदर की साइड है, इनर साइड है, उससे ही ग्रोथ होता है और आउटर सरफेस वहीं से भी ग्रोथ होता है। सो वो दोनों साइड से ग्रोथ करते हैं। मगर जो माउंटेन है उसमें सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस से ही ग्रोथ होता है, वो हम देख पाते हैं। सो माउंटेन्स like non-living objects are accumulation some materials on its surface and increasement in size। So mountains are non-living objects। So ऐसे जो non-living objects है, इसी की वजह से हम जो ग्रोथ है उसको growth is not defining characteristic of living organisms। जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में हमको ऑब्जर्व होती है। वी शो both the organisms this characteristic, so we cannot say that it is a defining characteristic of living organism। It is also your second question, that is why growth is not considered as defining characteristic of living organism। So it is the answer of your second question। Now we discuss about the second characteristic of living organism, that is reproduction। What is reproduction? Students, you studied this reproduction in your lower classes। So define the word reproduction: production of progeny which is more or less similar to its parents। It is known as reproduction। अपने जैसी दूसरी प्रोजेनी है उसको प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको हम रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। ये जो रिप्रोडक्शंस है, जो न्यू वंस है, वो सम और
लेस अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं. सो रिप्रोडक्शंस आर टू टाइप्स. रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स है. एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Basic differentiations between sexual reproduction and asexual reproductions are also discussed in our first video, but here we also discuss this differentiation. In sexual reproductions, two opposite sex are possible. Requirement is two opposite sex sexual person. In asexual reproductions, only one characters are present. So sexual asexual reproduction is basically very different. In asexual reproduction, many types are included like fission, binary fission. Second one is budding. Third one is multiplication. Fourth one is fragmentation. Fifth one is spore formation. So ऐसे कई सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें ये इंक्लूडेशंस है. फिश बर्डिंग की जो प्रोसेस है वो हम हाइड्रा और ईस्ट में ऑब्जर्व करते हैं. फ्रेगमेंटेशन जो प्लेनेरिया लाइक फ्लैटवर्म है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं. स्पोर फॉर्मेशन जो है वो हम फंजाई में ऑब्जर्व करते हैं. मल्टीप्लिकेशन एंड फिशन है वो हम अमीबा और पैरामीशियम में ऑब्जर्व करते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन gametes are formed. Male gametes and female gametes are produced and both are fused and form the zygote. This process is known as sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको देखने को मिलती है. कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा जिसमें हम रिप्रोडक्शन नहीं ऑब्जर्व कर सकते. मगर बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ लाइक मोल्स, sterile honeybees and unfertile human couple. They cannot be reproduced throughout their life. So रिप्रोडक्शन है वो ऐसे कई सारे कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें नहीं हो सकता. सो एक कैरेक्टरिस्टिक के मिसिंग होने से या फिर एब्सेंट होने से हम उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं रख सकते. ऐसा तो हो नहीं सकता. सो ग्रोथ की तरह ही रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो defining property or characteristic of living organisms. So ग्रोथ की तरह ही हम रिप्रोडक्शन को भी अनडिफाइनाइटिंग कैरेक्टरिस्टिक में रखते हैं बिकॉज ये दोनों में इंक्लूड है इसीलिए. सो इट इज ऑल्सो योर थर्ड क्वेश्चन दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज अनडिफाइनाइटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. गिव द साइंटिफिक रीजन. सो ये साइंटिफिक रीजन है कि दो टाइप के सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी ऑर्गेनिजम्स में हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो. मगर ये जो मोल्स है, स्टेराइल हनीबीज है और जो अनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स है उसमें हम रिप्रोडक्शन थ्रू आउट लाइफ नहीं देख सकते. इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम अनडिफाइनाइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. सो ये तीनों के तीनों लिस्ट आउट द कैरेक्टरिस्टिक. ग्रोथ आर अनडिफाइनाइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स
and reproduction is also undefined characteristic of living organisms. ये तीनों के तीनों आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक्स के. सो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो प्रॉपरली पढ़े और रिवाइज करें, आपको डेफिनेटली इसका आंसर है वो लिखने में आसान है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज मेटाबॉलिज्म. Metabolism is a Greek word derived from metabol, which means changes. In our cells, physical, biological and chemically processes are also included in our body. So these 3 processes are changes in our cells. So metabolism is considered as a chemical changes, biologically changes and physically changes. So metabolism is 2 types, that is anabolism and catabolism. Anabolism and catabolism. एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारी बॉडी में दिखने को मिलती है. एनाबॉलिज्म जो है वो सिंथेसिस प्रोसेस है, इट इज सिंथेसिस प्रोसेस. एंड कैटाबॉलिज्म जो है वो ब्रेकडाउन प्रोसेस है. अगर एक एग्जांपल ले, प्रोटीन्स आर इंक्लूड इन आवर बॉडी which is complex molecule. So जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है. अगर प्रोटीन को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे अमीनो एसिड फॉर्म होगा जो कि है सिंपलर मॉलिक्यूल. सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा और जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स है उसमें उसको हम सिंथेसाइज करेंगे. सो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो प्रोटीन है वो बिल्डअप होगा. सो breakdown process and synthesis process is combined to make the metabolism. So define the word metabolism. metabolism को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि sum total of all the chemical reactions occurring in our body. This is known as metabolism. मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखने को मिलती है. ये कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमको ऑब्जर्व नहीं होंगे. लाइक माउंटेन्स है, माउंटेन्स में कभी भी किसी भी टाइप का रिएक्शन है वो दिखने को नहीं मिलता. सो मेटाबॉलिज्म इज considered as defining characteristic. Characteristics. So metabolism is defining characteristics. Here anabolism and catabolism. कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसमें एक में सिंथेसिस एटीपी का सिंथेसिस होगा और एक में है वो एटीपी यूटिलाइज होगी. सो इट इज अ बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म एंड इट इज योर क्वेश्चन बैंक्स नंबर 4 क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म और give the differentiations between 2 major steps of metabolism. उसमें भी आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में ही लिखना है. So it is your 4th questions, that is differentiations between anabolism and catabolism, and metabolism is also considered as defining characteristics. उसके बाद की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉन्शियसनेस यानी कि एबिलिटी टू सेंस. All the living organisms have characteristics to respond the environment's factor like light, temperature, wind, etc. Ability to sense जिसको हम consciousness बोलते हैं. So all
the living organisms have specialized response capacity to environment factor like light, temperature, वाइन, कहीं सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा। सो ये जो सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसके ऑपोजिट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है वो उसको रिस्पॉन्स देती है। ये जो रिस्पॉन्स देने की जो प्रोसेस है उसको कॉन्शियसनेस यानी कि एबिलिटी टू सेंस बोलते हैं। ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं वो सीजनल भी हो सकते हैं, टेम्परेचर रिलेटेड भी हो सकते हैं, कोई न कहीं जगह लाइट रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे रिएक्शंस है, जो फैक्टर्स है जिसको बॉडी है वो एक्सचेंज करती है, एक्सेप्ट करती है और उसके ऑपोजिट रिस्पॉन्स देती है, तो उसको भी कॉन्शियसनेस और एबिलिटी टू सेंस बोलते हैं। और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैन नॉट बी ability to sense, it have not be ability to sense, so it is also considered as definite characteristic of living organisms. So students, this is the characteristic basic questions, and we revise again and answer these questions. So please read carefully and write the notes, and जो हमारा वीडियो है उसको प्रॉपर तरीके से देखें। जहां भी आपको डाउट लगता हो प्लीज हमसे पूछिए, कॉल कीजिए और एक दो बार वीडियो को देखें, एक दो बार लिखें और आप डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो लिख पाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।